हे गाइस, सो जीबी डे 1 आइटिनरी इज ऑलरेडी रिलीज, तो अभी तक जाके नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो एंड सेव इट फॉर लेटर यूज व्हेनेवर यू आर हियर. People, namaste. I'll be talking about in this video a very famous trek is called Sirolsar Lake. Watch this video till the end to gather as much information as you can, like from where to start your trek distance, difficulty level, is guide required or not, how to reach at your starting point pocket friendly, how commercialized this has become, and many more things. And now without some further talk, let's rock and roll. Sirolsar trek starts from the famous point is called as Jalori Jot or also known as Jalori Pass. The distance from Jibi main market to Jalori Pass is approx around 12 to 13 kilometers. I boarded a bus at around 8 am from Matt Packer's hostel near bus stop and the ticket price is just 20 rupees. I reached my destination. This is one of the best pocket friendly option to reach Jalori Pass to catch an early bus because रास्ते में कुछ भी हो सकता है, you never know. Other option is taxi which will cost you around 1000 to 1200 full cover. So if you are in a group you can split and if not I would suggest go for bus option. बस से जाना थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है बिकॉज इट स्टॉप्स एट मेनी प्लेसेस. लाइक जिबी के बाद आएगा ग्यागी विलेज वेयर दे स्टॉप फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स टू हैव ब्रेकफास्ट एट प्रताप ढाबा एंड नियरली 40 to 80 रुपीज में यू कैन हैव योर फिलिंग मील अलॉन्ग विद चाय. आफ्टर दैट 5 मिनट्स हम आगे ही आए थे तो ये चीज़ हो गई. This thing happened, which delayed us by 15-20 minutes to our destination. For this reason, leave early for a local transport to catch. ग्यागी के बाद रास्ता काफ़ी upward inclined है, with beautiful views, so आराम से बस चलती है एक फर्स्ट या सेकेंड गियर में. पहाड़ी लोगों को प्रैक्टिस रहती है यहाँ ड्राइव करने का. For visitors who are planning to come by their own vehicle, be careful on upward and downward inclination too. After Gyagi, next stops comes is Shoja and then plus 5 kilometers Jalori Pass. Some devotees come here to take the blessings of Kali Mata and पहाड़ी लोग काफ़ी मानते हैं. Anyway, after reaching to Jalori Pass, one side goes to Raghupur Fort Trek. A new side trek can be a one-day activity and other goes to very famous Sirolsar Trek. There's a parking facility available to park taxi or private vehicle. One can have their breakfast or any small light meals around और आगे भी जाके आप ले सकते हैं चाय या like chai, coffee, siddu or Maggi. Now starting of a trek, the Sirolsar distance is 5 km and I completed my one way in 2 hours, which includes मेरा shoot करना, rest लेना, Maggi खाना, enjoy करना and so many things. Another popular site is called 360 degree viewpoint जहाँ पे ये जवानी है दीवाने की शूट हुई थी. जी हाँ, वहीं पे हुई थी exactly. Sorry about the wrong information which I provided you in my last video कि सिरोलसर लेक ट्रैक पे हम जा रहे हैं जहाँ पे ये जवानी की. No guys, 360 डिग्री पे हुई थी जहाँ पे टेम्पल है. So basically कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जलोरी पॉइंट से ऊपर चले जाते हैं टूवर्ड्स 360 डिग्री. काफ़ी मॉडरेट स्टीप है विच विल टेक यू अप्रॉक्स 30 मिनट्स टू गो अप एंड फिर लोग क्या करते हैं वहाँ से नीचे जाते हैं फिर सिरोलसर जाते हैं विच विल मेक यू टायरिंग. कम ऑन गाइस, इंजॉय भी तो करना है आपको ट्रैक का मज़ा लेने के साथ साथ. ऐसे तो नहीं होना चाहिए, राइट? आई वुड सजेस्ट गाइस प्लीज़ ऐसा मत करना. जस्ट गो फॉर ओनली सिरोलसर ट्रैक. By the way, just for your quick information, I have also covered 360 degree on the day when I covered my Raghupur trek. That is my next release. Coming back to Sirolsar, keep one warm or woolen jacket with you because काफ़ी ठंड रहती है. It's an ideal day trek for beginners and the level of trek is easy for neither too flat nor too steep continuously. तो balanced रहता है.
On your way, you will have so many options to eat light and can grab some energy drinks. आगे चलते चलते जंगल जैसा ट्रैक जैसा वाइब रहेगा. Mostly people start here at 12 noon, but if you want less people around, so start at around 10 and 11 in the morning. One important thing for sure to note down, वहाँ पे कोई washroom facilities available नहीं है, so ये ध्यान रखना. Open में रहता है, किसी से भी आप पूछोगे तो वो लोग यही बोलेंगे, open में है, open में है, open में है. Talking about the camping facility here, there is a proper camping site with basic facilities available like food, stay and washroom, and the charges are approx around 1000 per person including breakfast and dinner option. You are not allowed to pitch your own tent because there's a reason. This site has just started and it is not as much commercialized like the other treks, for example Khir Gange. Oh my god. So limited options हैं, वहाँ के लोग हैं, उनकी अर्निंग इसी पे डिपेंड है. So why to pitch your own tent? So better go with them. Cheer up guys, you have reached to your spot. To be honest, Raghupur and 360 degree have better view than this, but you can find your own sweet spot to sit down, to chill on top of it. यहाँ पे भी एक माता जी का टेम्पल है जो कि यहाँ के अगेन लोकल लोग काफ़ी मांगते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे. कभी कभार प्रसाद बढ़ता है, कभी कभार एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग में होता है ये सब. वेल दैट्स ऑल अबाउट द ट्रैक गाइज. ये ट्रैक करना बिकॉज इतना दूर आके ये अगर चेक नहीं करोगे तो फिर तो प्लीज़ कर लो. What I have observed is mostly कुछ treks का destination matter इतना नहीं करता, but what matters to us is about the great trail and the company with us. So better not to miss this trek. Next release will be on Raghupur and 360 degree viewpoint. वहाँ का view और रास्ता काफ़ी मज़ेदार रहेगा, तो मिस ना करना. Stick to this channel and to my Instagram handle is called Khao Local Ghumo Global. Drop your questions or any suggestions in the comment section on YouTube if you have any, or you can also DM me on my Instagram handle is called Khao Local Ghumo Global. I'll see you guys in my next release. Till then, travel safe, stay safe and explore the world with care. Bye. Salam.